हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेजी कोड। सो इस वीडियो में हम आज की geeks की प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। फॉर दैट आज एक प्रॉब्लम है, लाइक देयर इज़ टू प्लेयर्स। उन दोनों को मतलब एक गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर से बिट्स काफ़ी सारी मतलब एक नंबर के अंदर है, तो उन्हें अनसेट करना, उनको रिमूव करना उस बिट के अंदर से एक स्ट्रीम है। लाइक अगर हमें input 8 दिया है, as you see there is the test case is here and I am explaining that just a second. So for the test case 8 we'll be using some like one this for the binary representation 1000 and for this test case we'll consider that if the game of rule says in one turn a player can remove any set bit of n in its binary representation to make a new and हमें उस बिट को रिमूव करना है। कोई भी एक बिट को रिमूव कर सकता है, प्लेयर 1 या प्लेयर 2, कोई भी उनमें से एक बिट रिमूव कर सकता है। दूसरा रूल है कि जो प्लेयर 1 है वो हमेशा फर्स्ट टर्न लेगा, और जो तीसरा रूल है वो कहता है कि अगर हमारे पास एक भी बिट नहीं है सेट करने के लिए तो वो जिस बंदे की टर्न है वो हार जाएगा। सो हमें बताना है कि इस गेम में जीतेगा कौन। हमें सिर्फ इनपुट में एन मिलेगा, यानी कि 8। हमें सारा इंटरप्रिटेशन करना है किस तरह से हम बाइनरी में उसको कन्वर्ट करेंगे और उस स्ट्रिंग को हम यूज़ करेंगे। सो लाइक दिस स्ट्रिंग में प्लेयर P1 or the turn always start from the player P1, so the player P1 removes the 1 and there is no bit residual for the player 2. so player 2 कोई भी बिट यूज़ नहीं कर पाएगा, इसलिए प्लेयर 1 जीतेगा और हमारा प्रोग्राम रिटर्न कर देगा 1. सो लाइक द आउटपुट इज़ 1. The output is always 1 and 2. Like in the case of this test case, the input is 1 and the player 1 will take that. So for the understanding, let us take a different test case like this one. Okay, so the player P1 can remove any bit from this string. So हमें कोई ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम राइट से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं। हमें मतलब इस बिट्स के अंदर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि हमें सिर्फ आगे से ही रिमूव कर सकते हैं या पीछे से या फिर बीच में किसी ऐसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर रिमूव करना, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ बन जाती है। तो हम पीछे से रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। प्लेयर 1 ने लाइक विल सेट एन काउंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और प्लेयर 1 ने एक बिट रिमूव करी तो काउंट की वैल्यू 1 होगी। प्लेयर 2 ने रिमूव करी और काउंट की वैल्यू होगी 2. लाइक अभी तक 2 टर्न्स हुई हैं और 2 बिट्स रिमूव हो चुके हैं। तो 3 प्लेयर 1 ने रिमूव करी तो 3। हम 0 रिमूव नहीं कर रहे क्योंकि हमें 0 से कोई मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ 1 रिमूव करने हैं 1. सो लाइक हमने अभी तक 3 बिट्स रिमूव कर चुके हैं, ये मतलब है इस काउंटर का। सो प्लेयर 2 ने रिमूव करी एंड काउंटर विल बी 4, एंड फिर प्लेयर 1 ने रिमूव करी एंड काउंटर विल बी 5, एंड प्लेयर 2 ने रिमूव करी एंड काउंटर विल बी 6. सो आपने एक चीज़ नोटिस करी इसके अंदर क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे अपनी बिट को रिमूव करते जा रहे हैं उसके अंदर अगर काउंटर की वैल्यू हमारी ओड हो रही है, अगर जैसे अभी इवन था तो हमारा प्लेयर 2 ने लास्ट बिट करी है। लाइक अगर हमारा काउंट की वैल्यू 6 थी तो हमारा जो प्लेयर 2 था उसने वो जीता है, मतलब लास्ट उसने रिमूव करी है और फर्स्ट के पास कोई चांस नहीं बचा है थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग जीतने के लिए। सो उसने क्या किया, लास्ट सेकंड प्लेयर 2 ने रिमूव करी है। बट अगर यहाँ पे हमारी कोई ओड वैल्यू होती लाइक 5, तो मतलब ऐसे इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास फर्स्ट प्लेयर ने रिमूव करी है बिट, लास्ट बिट, और प्लेयर 2 के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो हार जाएगा, तो हम प्लेयर 1 रिटर्न कर देंगे। सो दिस विल बी आवर होल सिनेरियो. सो
there is one more concept, like if we want to remove the uh, rightmost bit in any binary representation, this will be done by uh, like x and x minus 1. Suppose the x will be 7, and so giving 7 and 6 will remove our last bit in the stream of 7 not for 6. So this is the basic bit concept, I think you know. And so let's code it. So let us take a counter and take a different variable x, which will take the value of n. We will change x, it is not prescribed to change the n for every input, so we'll change x and that copy the value of n in the x. So let us run a while loop. In this loop we'll be traversing from right to left. So as I told you, like how to unset the rightmost bit. So we'll be traversing, like take an example. So this will not affect any 0. So whenever it tackles 1, it will remove 1. This condition will remove the last one, and for next iteration this will remove 1 1 1. And suppose just think of the base condition. So this will be removed, this will be removed, this will be removed, and sorry, what's happening? Actually my right key is not working. So when we have to stop, so when all the bits are 0 or null, so n is not equal to 0, or simply we can write n, cause it always work only if n is greater than 0 as the by default condition of the loop. तो हमें अब करना क्या है, हमें हर एक आइटरेशन में काउंटर की वैल्यू बढ़ानी है, जैसे मैंने बताया था आपको. So that is remove it from here, and when this loop completes, if our count mod 2 count mod 2 is equals to 0, like our counter is even, so the last bit will be removed by the second pair, because player 1 will always be preferred for the first turn. So last bit will be removed by the second player, and so will be returning the winner as 2, because player 1 will have no choice for picking the bit to remove. So if this is not the case, just return player 1. And let's test our code. It's runtime error. So I think we made we have to place this in a bracket, but I don't think this will create any error. Let's check it now. It's creating an runtime error.
So this is this so there is one mistake. So when we will be taking this n, and this will not be taken as n, cause we are decrementing our unsetting our bits in the x which has copy of n. So that's the case for the runtime error. So as you see, the 8 is returning 1. So let us also check like 24, some any random test case. So it's returning player 2. So our code is correct, and hope this will pass all the test cases. So hit the like button and subscribe to my channel for more such videos.